अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं जनाब पैथोलॉजी के पहले लेक्चर को। वो है सेल इंजरी। तो सेल इंजरी क्या है? इट इज़ एनी डैमेज टू द सेल, एनी इंजरी टू द टिश्यू एंड इट causes the alteration of the normal function of the cell and leads to a disease condition. Normally हमारी बॉडी के जो सेल्स है they constantly interact with the environment and they are exposed to the various kind of stresses, ठीक है, and these stresses may be physiological or pathological. To deal with these stresses, cells of the body shows adaptation in the form of hypertrophy, hyperplasia, metaplasia, atrophy. But if the stress still continues beyond the adaptation, then it causes cell injury, which is a damage to the cell. And the cell injury may be reversible or irreversible. In reversible cell injury, the changes can be reversed back by removing the stress and the cellular integrity of the cell. An irreversible cell injury is intact, but an irreversible cell injury there are irreversible changes in the cell occur, and these changes cannot be reversed by removing the stress. ठीक है, and the irreversible cell injury it leads to the cell death, and the cell death may be apoptosis, which is a programmed cell death, and it may be necrosis, which is the accidental cell death. अब हम आ जाते हैं about the causes of cell injury. तो उसमें सबसे पहले hypoxia. Hypoxia is the most common cause of the cell injury. In hypoxia, there is a decrease in the oxygen supply occur towards the tissue, which ultimately leads to the cell death. And the most common cause of hypoxia is ischemia, in which there is a decrease in blood supply, oxygen supply occur toward the tissue. अब hypoxia के हमारे पास various types है या causes है। सबसे पहले हमारे साथ है hypoxic hypoxia, उसके बाद है anemic and then stagnant hypoxia and histotypic hypoxia. Hypoxic hypoxia, it involve deficiency of oxygen at the level of lungs. अगर हमारे साथ lungs के level पे कोई problem हो तो उसमें हमारे साथ hypoxia होगा। तो ये physiological भी हो सकता है, which occur at high altitude and which there is a decrease in the partial pressure of the oxygen occur at high altitude. ठीक है, या हमारे साथ pathological भी हो सकता है like various lung diseases. It include the chronic obstructive pulmonary disease. तो उसमें भी हमारे साथ the oxygen transport to the alveoli हमारे साथ क्या होता है? कम होता है। दूसरा हमारे साथ क्या आता है? एनीमिक हाइपॉक्सिया। तो एनीमिक हाइपॉक्सिया में ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ होती है। और ये किस वजह से डिक्रीज़ होती है? या तो हमारे साथ जो हीमोग्लोबिन है उसका लेवल कम होगा, जिस तरह हमारे साथ एनीमिया में हीमोग्लोबिन कम होता है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। अगर दूसरा हमारे साथ ये अगर हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइज़न तो उसमें भी हमारे साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कम होती है। इस तरह हमारे साथ जो मेथ हीमोग्लोबिन है इसमें जो आयरन होता है ये हमारे साथ पेग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? और ऑक्सीजन वो पेग कैरी नहीं करता मेथहीमोग्लोबिन। तीसरा हमारे साथ आ जाता है स्टैग्नेंट हाइपॉक्सिया। तो स्टैग्नेंट हाइपॉक्सिया में हमारे साथ क्या आता है? ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, ठीक है? या तो वो आर्टिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन होता है या वीनस ऑब्स्ट्रक्शन होता है। मतलब कि अगर हमारे साथ ये सपोज़ आर्टरी है, तो अगर इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आएगी तो ब्लड सप्लाई कम होगी, तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन सप्लाई भी कम होगी, ठीक है? तो अगर आर्टिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो हमारे साथ इस्कीमिया होगा, इसी तरह वीनस ऑब्स्ट्रक्शन अगर होगा तो हमारे साथ बैक प्रेशर राइज़ होता है जिसकी वजह से आर्टेरियल सप्लाई ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो है ना वो कम होता है। आखिर में हमारे साथ क्या आता है? Histotypic hypoxia. Histotypic hypoxia involve a problem in the oxygen utilization at the tissue level. Like हमारे साथ अगर एग्जांपल ले लें आप साइनाइड पॉइज़निंग में, साइनाइड पॉइज़निंग में क्या होता है? जो साइटोक्रोम एंजाइम होते हैं आपका माइटोकॉन्ड्रिया वो इनहिबिट हो जाते हैं, हमारे साथ एटीपी फॉर्म नहीं होता तो अल्टीमेटली हमारे साथ सेल डेथ होता है। अब हम आ जाते हैं सेकंड कॉज़ ऑफ सेल डेथ व्हिच इज़ द toxin. Toxins are any substances that are harmful to a body and causes damage to the cell. ठीक है, and these toxins may be exogenous, which include the air pollutants, cigarette smoking, the drugs, which causes cellular damage. इसी तरह हमारे साथ they may be endogenous, like they include the high lipid concentration in the plasma, causes lipidemia, lipiduria. इसी तरह हमारे साथ अगर ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ जाए तो हम कहते हैं कि ग्लूकोज causes various micro and macrovascular angiopathic changes like in diabetes. ठीक है, these are हमारे साथ है infectious agent. The infectious agent may cause cell death, and these infectious agent may be viral, maybe bacterial, maybe fungal infection, or maybe protozoal. तो हमारे साथ आता है malnutrition. Malnutrition may lead to the cell injury. तो ये हमारे साथ malnutrition क्या है? इसमें हमारे साथ under nutrition भी आता है, over nutrition भी आता है, and that is the energy deficiency or the nutrient deficiency. Example में हमारे साथ मास आता है, kwashiorkor का आता है, इसी तरह vitamin deficiency, vitamin A deficiency, उसमें xerostomia हमारे साथ cause होता है, vitamin C में scurvy cause होता है, ठीक है? अब हम फिर इसके बाद आता है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। तो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस इंक्लूड द ऑटोइम्यून रिएक्शन and that involve the over response of the body immune system against its own tissue, and the body immune system recognize its own antigen or cell as a pawn and
induces immune reaction against certain causes NG to its own टिश्यूज आर द सेल लाइक हम अगर एग्जांपल ले लें रूमाटाइड आर्थराइटिस में जिसमें हमारे साथ ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्म होते हैं अगेंस्ट द जाइंट्स इस तरह हमारे साथ ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया भी in which antibodies are formed against its own RBC and causes the lysis of RBC and leads to hemolysis. हमारे साथ genetic abnormalities भी आते हैं they also lead to a cell death and it involve the mutation in the gene which leads to a fatal diseases. अगर एग्जांपल ले लें हम अल्जाइमर डिजीज के तो अल्जाइमर डिजीज में हमारे साथ क्या होता है there is mutation occur in amyloid precursor protein and there is excessive breakdown of this protein occur into alpha beta peptide and the tau protein which accumulates and causes damage to the neurons and leads to a dementia. इसी तरह हमारे साथ physical agents भी आ जाते हैं which include the trauma accident. The change in temperature also lead to a cell NG. अगर हमारे साथ टेम्परेचर बहुत लो तो जो ब्लड वेसल होते हैं वो वैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं ठीक है एंड लीड्स टू द पॉज बाइट और ब्लड सप्लाई कम होती है एंड लीड्स टू सेल डैमेज ठीक है इसी तरह हाई टेम्परेचर लाइक हीट दे may causes damage. The exposure to the radiation like exposure to the X-ray radiation or the UV light they may also lead to a cell injury. The excessive exposure to the UV light causes the basal cell carcinoma. अब हम आ जाते हैं about the severity of the injury. You know, it depends upon the nature of the cell and it also depends upon the duration of the stress के stress हमारे साथ कितने टाइम के अगर शॉर्ट टाइम के तो सेल अडॉप्ट करेगा अगर लॉन्ग टाइम के लिए होगा तो हमारे साथ सेल इंजरी होगी ठीक है इससे हमारे साथ जो न्यूरोनल सेल होते हैं तो वो दे आर मोर सेंसिटिव टू सेल इंजरी ठीक है एंड दे कैन बी डैमेज विद इन 2 मिनट इफ द ब्लड सप्लाई इज डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई इज डिक्रीज इसके बाद हमारे साथ कार्डियक फाइबर्स आ जाते हैं उसके बाद हमारे साथ स्मूथ मसल फाइबर आ जाते हैं जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है दे आर मोर रेजिस्टेंट टू द सेल injury ठीक है and CNS the Purkinje fibers of the cerebellum are more sensitive to injury and also the cortical fibers of the cerebellum which are also sensitive to the injury ठीक है इससे हमारे साथ कार्डियक टिश्यू में जो सब एंडोकार्डियल एरिया है विच सब एंडोकार्डियल एरिया इज सेंसिटिव टू द इंजरी इसी तरह हमारे साथ जीएटी में जो स्प्लेनिक फ्लैक्चर है इट इज आल्सो सेंसिटिव टू द सेल इंजरी